So today our topic is the phenotype, genotype, and some other topic, and then mechanism of action of restriction endonuclease. So first we take the phenotype, means the physical appearance or the morphological character of any individual, any organism is called phenotype. That means वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है. What is the physical feature of any organism is called phenotype. Second is genotype, means genetic composition of an organism is called genotype. So these are the two words which used in a biotechnology. Phenotype generally used in the case of morphological character, and genotype generally used in a genetic character. Now, how it is useful in biotechnology? So in morphological character of phenotype, when these character or desirable gene involved in the improve the productivity, that time the term phenotype used in this case. Genotype means change in DNA, and biotechnology change in DNA. That time they use the genetic composition, they use the genotype for change in the character, change into the variety. So the two terms used in the biotechnology, which is phenotype and then genotype. Means phenotype is physical feature, and that means in case of plant, we can take the vegetative part, which is stem, root, and leaf. जब इनमें improve करना है generally, that time they use the word phenotype. जब इनमें genetically composition में change करना है, that means change into the DNA or gene, that time they use the word which is genotype. Next term, which is related to the phenotype, genotype, and then tissue culture. The two terms here, first is the tissue culture and second is the culture. So culture or tissue culture means the process by which we obtain the many plants with the help of a small piece of plant is called tissue culture. And technique of tissue culture is very simple. First of all, we take the X plant, that means any part of plant. Use as the X plant. Now undergo in the test tube. Imagine we take the leaf as the X plant. After the transfer into the test tube, it undergo in the ligation, that means involve the enzyme which convert these X plant into the structure which is called callus, means undifferentiated this is the group of undifferentiated cell is called callus. So these X plant convert into the group of callus, that means undifferentiated. Presently यहाँ पे हम देख सकते हैं कि that it is the leaf and this is the branches. After undergoing the tissue culture technique, these small leaf and then branch convert into the undifferentiated cell. It is called callus. Now these callus undergo in the nutrition medium or nutrient medium. Now this nutrient medium also called the culture medium. Okay? Nutrient medium also called culture media or medium. Okay? ये दोनों नाम एक ही है. When we incorporate the culture media or the nutrient media into the test tube which contain the callus, it undergo in the development. After the incorporation of these chemicals, the callus, the small piece of callus now transfer into many test tubes. It is a small piece of callus now transfer into many test tubes, and culture media is incorporated into the each tube.
Now, after utilization of culture media, which contain the proper amount of phytohormones, proper amount of minerals, which is essential for plant growth. Now, these plants convert into the small plant. Every test tube which contain the callus now develop the plant. Now, the structure is called plantlet. That means the small plant is called plantlet. The complete technique is called tissue culture technique. So it is in general, again repeat, the technique by which we obtain thousands of copies of plant with the help of a small piece of plant is called tissue culture. Here the word culture is used because we culture the tissue with the help of culture media or nutrient media and produce the new plant. That time it is called tissue culture. What happens in tissue culture? First, we take the any part of plant like small piece of root, small piece of leaf, stem, bud, fruit, embryo, seed, any part of plant which is utilized in the tissue culture. The part is called explant. When these explants undergo in the test tube in the laboratory condition, especially in a biotechnological lab, these plants undergo in the test tube. After then, these chemicals introduced into the dissociation of these cells, that means the differentiation to undifferentiation. यहाँ पे differentiated which is in the form of leaf. Now these leaf is undifferentiated into the undifferentiated group of cell. तो यहाँ पे बॉल की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, it is undifferentiated cell और ये differentiated है. And undifferentiated group is called callus. अब ये कैलस जो बना है, these callus undergo in the different portion, यानी कि छोटे छोटे पीस में कई सारे टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे. एंड ईच टेस्ट ट्यूब इंट्रोड्यूस विद द कल्चर मीडिया. और सब टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे? कल्चर मीडिया डाल देंगे. दैट मीन्स न्यूट्रिएंट मीडियम डालेंगे. एंड न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेन द फाइटोहार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन in optimum amount with the all minerals, with the all essential minerals which are required during the time of growth in a plant is introduced in the each test tube. तो इनका कलेक्टिवली जो कॉम्बिनेशन होता है सॉल्यूशन का, जिसमें फाइटोहार्मोन्स भी हैं एंड देन अदर मिनरल्स आल्सो प्रेजेंट, द कलेक्टिव कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कल्चर मीडिया और न्यूट्रिएंट मीडिया. नाउ ईच एंड एवरी टेस्ट ट्यूब अंडरगो इन द डेवलपमेंट, कई सारे प्रोसेस के थ्रू होता है. व्हेन दे अंडरगो इन द डेवलपमेंट, the each callus convert or the small piece of callus convert into the small plant. The small piece of plant is called plantlet, and now these plantlet is used in different purposes. So it is called tissue culture. And how it is helpful in the biotechnology? It is helpful in the biotechnology in this manner that when we incorporate the some gene which is desirable gene in the plant, which is drought resistant. Imagine we take the gene which is drought resistant and capable to produce even in the presence of high temperature, even in the presence of scarcity of water. The tissue or the plant is called drought resistant. So these type of plant is produced in this manner, first of all by the biotechnologist, and now the small piece of this plant now undergoes the tissue culture and produce the millions copies of the plant which is drought resistant and transferred to the planting. So it is the use of tissue culture technique. Now second technique which is useful in the culture technique. Now these culture technique is introduced into the bioreactor. Means when we use these culture technique into the generation or the production of some chemical with the help of bacteria, that time the base matrix or base chemical is called culture. That means हमने desirable gene को किसी भी इमेजिन इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन को वी हैव टू इंसर्ट इनटू द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया. अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल के साथ रिप्रोड्यूस होगा एंड रिप्रोडक्शन के बाद अपने नंबर बढ़ाएगा. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ दिस बैक्टीरिया, नाउ वी अंडरगो इनटू द कल्चर सेक्शन. तो फिर हम इसको कल्चर सेक्शन में ट्रांसफर करेंगे और यहाँ कल्चर सेक्शन जो होगा ये बायोरिएक्टर में होगा. दैट टाइम during the time of this culture section in the bioreactor, these bacteria produce the product
और ये बैक्टीरिया क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, and then product is in the form of insulin. So it is called culture. Clear? So it is a topic which is related to the tissue culture technique. Now in this tissue culture technique, nine, nine. Now in this tissue culture technique, we use the callus, we use the culture media, we use the explant and obtain the plant plate. Clear? Next topic which is related to this chapter, a bioreactor I already explained, the large size equipment which is used to obtain the product. Recombinant टेक्नोलॉजी से जो भी हमने चेंजेस करके जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस की है मिलियंस ऑफ कॉपी, उन बैक्टीरिया को बायोरिएक्टर में डाल देंगे, बायोरिएक्टर गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. क्लियर? सो इट इज अ बायोरिएक्टर. नेक्स्ट वी टेक next is mechanism and action of restriction endonuclease. How the restriction endonuclease work to cut the DNA fragments, and how the DNA fragment which contains the sticky and joined with the help of ligase. This process is as follows. First of all, we can take the DNA, which is double strand DNA. Now we take the 2 DNA, which is in the section of, it is the first DNA, and then it is second DNA, which involve in the process of recombination. Now, first we take the restriction endonuclease, like E. coli, RY11 or RY1. Now these restriction nuclease or restriction enzyme, which is E. coli RY, use the strand of these. So we can draw this complete strand in this form that we can easily recognize it. First is A, T, T, G, and then C, and just above T, A, C, and then G. In the same manner of in the other DNA segment, we contain the lower side is consist by T, then A, C, and G, and upper side contain A, T, G, and then C. Now, the restriction endonuclease first of all recognize the palindromic sequence. Clear? Now, when they recognize the palindromic sequence, these palindromic sequence is recognized just before the site where they want to stick the new DNA strand. Clear? Now, after the identification of palindromic sequence, the restriction endonuclease enzyme
cut the small segment here from upper side and here from the lower side. That time the word use the sticky segment और sticky end. क्लियर? तो यहाँ पे ये भी sticky end हो गया और यहाँ पे ये भी sticky end हो गया. And these sticky end is prepared by the restriction endonuclease. Now, in the next step, these two sticky end come join. अब ये sticky end सीधा यहाँ आ जाएगा. In next step, where it join with the adenine with the thymine A, then G with the C and C with the G. Here the I think it will be T, A, and then A, and it is the C and then G. So these strands join at the site and produce the recombinant DNA. Now, it is the upper strand and this is the lower strand. The joining of these strands by ligases, which is called a biotechnological glue. So ये biotechnological glue इन दोनों strand को जोड़ देगा and it produce the DNA which is called recombinant DNA. And then it is called recombinant DNA. So these recombinant DNA technology involve in this process to formation of recombinant DNA. Yeah? So it is a mechanism and the action of restriction endonuclease when we use it. Clear? Again repeat. First of all, the sticky end is prepared by the restriction endonuclease by the identification of palindromic sequence. तो यहाँ की sequence यानी कि end वाली sequence से ठीक पहले क्या कर लेगा? They identify the palindromic sequence. That means the sequence which can read in both sides. तो दोनों साइड से जो sequence read कर सकते हैं वो identify कर लेगा ये. नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन करने पर एग्जैक्ट साइड पे क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीजर की तरह दोनों साइड को कट कर देगा. आफ्टर द कटिंग ऑफ बोथ साइड, तो एक साइड का तो क्या कर देगा? अपर साइड कट करके अलग कर देगा और दूसरे साइड का लोअर कट करके अलग कर देगा. तो जब ये अपर साइड इधर का लोअर साइड है एंड दूसरी साइड का अपर साइड है, तो ये दोनों जब ज्वाइन हो जाएंगे, दैट टाइम इट इज फॉर्म द न्यू टाइप ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. Yes, so it is a work of restriction enzyme that it cuts the DNA at a specific site and then joins. Clear? So it is a mechanism of restriction endonuclease. 2 to 3 marks में क्वेश्चन बनते हैं इसके. Write the mechanism and action of restriction endonuclease. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि restriction endonuclease enzyme cut the specific site. Clear? अब ये specific site किसकी है? 1 मार्क में जो आपकी बोर्ड का सैंपल पेपर है उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन that the restriction endonuclease enzyme act on the which type of organism, act on a which type of genetic material. तो ये किसकी जेनेटिक मटेरियल पे नेचुरली वर्क करता है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल प्लाज्मिड. ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है और इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड में ये प्रेजेंट होता है. क्लियर? नाउ बैक्टीरियल प्लाज्मिड contain the restriction endonuclease RE. Clear? Now the foreign particle, which foreign particle? Which is called bacteriophages. अब यहाँ पे bacteriophages है. इस bacteriophages के पास में क्या है? ये वायरस है. क्लियर? अब ये वायरस जो होगा ये डेफिनेट है कि ग्रोथ करेगा. तो bacteriophages जो होगा, ये bacteriophages is the virus which infect the bacteria is called bacteriophages. अब ये वायरस क्या करेगा? लाइगेज प्रोसेस से इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा एंड देन ट्राई टू एंटर इनटू द बैक्टीरिया एंड जॉइन द बैक्टीरियल डीएनए. और ये यहाँ आके बैक्टीरियल डीएनए के साथ में ज्वाइन होने की ट्राई करेगा. बैक्टीरियोफेजेस. ठीक है? और इससे फिर क्या करेगा? इसको लाइटिक प्रोसेस में भेज देगा और लाइटिक प्रोसेस में भेजने के बाद में दे प्रोड्यूस द अदर बैक्टीरियोफेजेस. क्लियर? तो इट इज
द जनरल मैकेनिज्म विच इज इन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जनरली क्या होता है कि जब वायरस इन्फेक्शन करता है, तो वायरस इन्फेक्शन जो करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजिस। तो बैक्टीरियोफेजिस क्या करता है कि जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करता है। नाउ दीस जेनेटिक मटेरियल नाउ ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया ज्वाइन विद द डीएनए, और इसके डीएनए के साथ ज्वाइन होके फिर बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस बना देगा और आगे से आगे ये इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता रहेगा। इन जनरल ये होता है। बट when plasmid is present, the plasmid present होगा and these plasmid contain the restriction endonuclease enzyme. These restriction endonuclease enzyme act on the foreign DNA. Foreign DNA कौन सा है? The foreign DNA is the bacteriophages DNA. और ये बैक्टीरियोफेजेस डीएनए पे अटैक करेगा। जब ये जेनेटिक मटेरियल के साथ अगर जुड़ जाएगा तो जुड़ने पे ये अटैक करेगा एंड देन कट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए, और पेरेंटल डीएनए से इसको कट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ restriction endonuclease enzyme in bacteria, or we can say it is a natural mechanism. तो 1 मार्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है on which structure the plasmid act during the time of natural process. तो naturally restriction endonuclease enzyme किस पे वर्क करेगा, किस पे एक्ट करेगा? वो इसकी डिफेंस मैकेनिज्म हो गई बैक्टीरिया की, जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। और ये डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो क्या करेगी, इस बैक्टीरियोफेजेस को डिस्ट्रॉय करेगी, इसके डीएनए को ग्रोथ नहीं करने देगी। तो जिससे डीएनए ग्रोथ नहीं होगा तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरियोफेजेस नहीं बनाएगा और ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। So it is the natural mechanism of restriction endonuclease enzyme. Clear? So in today's class we discuss about the phenotype, genotype, and also discuss the mechanism of restriction endonuclease enzyme action. 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसका डायग्राम आता है 3 स्टेप्स में, एंड देन यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं विच इज इन द वेरी शॉर्ट आंसर, वो जनरली इन छोटे छोटे कंसेप्ट से ही आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी टेक द टॉपिक which is separation and isolation of DNA fragments by the gel electrophoresis। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट इज separation and isolation of DNA fragments and the name of technique is called gel electrophoresis। The name of technique is called gel electrophoresis। अब यहाँ पे क्या आता है कि पहले हमें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कौन से 2 एस्पेक्ट्स में यूज आती है। तो ये समझ में आ जाएगा, मिक्स नहीं होगा। द बायोटेक्नोलॉजी, इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूटिलाइज इन द 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1, अगर हमें डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करके नया कोई बेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करना है तो एक तो ये वर्क में आएगी। सेकंड, हमें डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करवा के बायोरिएक्टर के थ्रू प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, ये दूसरे में काम आएगी। तो फर्स्ट यूज इन द इंप्रूविंग द वैरायटी। क्लियर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज इन द 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 एस्पेक्ट इज दैट फॉर इंप्रूविंग द वैरायटी, वैरायटी को इंप्रूव करना है। जैसे कि प्लांट में निम्फ जीन को इंसर्ट करवा दिया, बीटी जीन को ट्राई जीन को इंसर्ट करवा दिया, बीटी कॉटन ऑब्टेन कर दिया, हाइब्रिड वीट हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर लिया जिससे वीट ऑब्टेन हो रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये सारे जितने हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या है, टू इंप्रूव द वैरायटी। तो इन सारी टेक्निक्स के थ्रू वैरायटी को इंप्रूव कर ले। जैसे कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं विच रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई मिल्क इन द काउ बफेलो, तो उनमें ये कुछ जीन इंसर्ट करवाती है जो काउ और बफेलो न्यू प्रोड्यूस की जाती है। तो उनमें भी क्या हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने वाली टेक्निक हो गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस केसेस में तो क्या होगा कि नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, उस ऑर्गेनिज्म के जाइगोटिक लेवल पे जीन को इंसर्ट करवाएंगे
एंड ऑब्टेन द न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म हमारी डिजायरेबल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपना एक्सप्रेशन देगा। क्लियर? लेकिन दूसरा जो एसेप्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो क्या है? ऑब्टेनिंग द बाई प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट। इंसुलिन ऑब्टेन होता है, बहुत सारे मेडिसिन ऑब्टेन होती हैं, क्लियर? कुछ ऐसे केमिकल ऑब्टेन होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट्स है विच इज ऑब्टेन बाय द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं इन दोनों एसेप्ट्स को सेपरेट रखना है, ठीक है? उसके इसके कुछ एसेप्ट्स लगभग सेम है, लेकिन कुछ एसेप्ट्स में, जैसे कि लास्ट के अंदर जब बायोरिएक्टर की बात करते हैं, तो बायोरिएक्टर से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है उसी में यूज में लिया जाता है बायोरिएक्टर। बट इन केस ऑफ जस्ट बिफोर द बायोरिएक्टर प्रोसेस, बायोरिएक्टर से ठीक पहले वाले प्रोसेस में स्लाइटली चेंज हो जाता है कि जो कल्चर में हमने बैक्टीरिया लिए, उन बैक्टीरिया की हेल्प से वेक्टर और वेक्टर से जाइगोट में जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वहां से स्लाइटली रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो हमारे सिलेबस में क्या होगा कि बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर। क्लियर? अब यहाँ पे आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो सेपरेशन ऑफ एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब ये मेन जहां से हमने क्या कर लिया, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क और सेलेक्ट द सेलेक्टेबल डीएनए, कि हमें यहाँ से डीएनए ऑब्टेन करना है। क्राई जीन हमने मान लो ऑब्टेन करना है, हमें हाइब्रिड जीन यानी कि व्हीट के अंदर, राइस के अंदर हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने वाला जीन ऑब्टेन करना है, ठीक है? हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करना है बायोरिएक्टर के थ्रू, तो वो जीन ऑब्टेन करना है। तो ये सारे के सारे जीन हमें पता है कि एक कंप्लीट न्यूक्लियस मशीनरी के अंदर एस्टेब्लिश होंगे। अब इस पूरी न्यूक्लियस मशीनरी के अंदर से इन जीन को आइसोलेट करना, ठीक है, डिजायरेबल जीन को, द टेक्निक इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो वर्ड जेल यूज में लिया गया है, ये है एग्रोस जेल। एगार एगार जो आता है, इस एगार एगार से ये जेल ऑब्टेन किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड रेफर टू इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट होती है ये, एंड दीज इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट कंटेन एनोड नंबर 1, कंप्लीट सिस्टम विच इज कॉल्ड ब्लॉक्स और वेल्स, ये होंगी। इस इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट की और इस टेक्निक की स्पेशलिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट ये होगा कि ये मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, दे सेपरेट द डीएनए, ठीक है? तो पहले हमें बेसिक सारे लिखने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ टेक्निक विच इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स द टेक्निक इन विच वी इंट्रोड्यूस द डीएनए on the matrix which is prepared by the agarose and separate on the base of their molecular weight. This is called gel electrophoresis. In gel electrophoresis we utilize the agarose matrix और agarose gel। एक जेल बनाया जाता है agarose, ठीक है, जेली जैसे होती है, क्लियर? तो वो जेली की तरह होगा। ये ऑब्टेन किससे किया जाता है? ये सी वीड से एगार एगार यहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा। ये इस एगार एगार के साथ में हम उस डीएनए को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट की हेल्प से इसको ऑब्टेन कर लेंगे। तो सिंपल बेसिक जो आपका कंसेप्ट है वो पहले आपको रखना है दिमाग में, फिर हम इसका पूरा प्रोसेस करेंगे। सिंपल बेसिक कंसेप्ट क्या है? नंबर 1, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों काम में लेते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जनरली यूटिलाइज टू सेपरेट द डीएनए, आइसोलेट द डीएनए। तो हमारा डिजायर डीएनए जहां कहीं भी, वहां से हमें उसको आइसोलेट करने के लिए इसको यूज में लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उसमें क्या क्या टर्म, क्या क्या इक्विपमेंट यूज में ले जाते हैं? तो इक्विपमेंट होगा एक तो स्टरलाइजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, टोटली डिसइंफेक्टेड एनवायरनमेंट। नंबर 2, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट होगी। इस इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने के साथ साथ में एनोड और छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए होंगे, वेल्स बनी होंगी, जिसमें हम इस एग्रोस सेल मैट्रिक्स और डीएनए को फिल कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट के बारे में हो गया। जेल कहां से प्रिपेयर करेंगे? वी प्रिपेयर द जेल विद द एग्रोस जेल, बोलते हैं इसको, एगार जेल भी बोल सकते हैं। ऑब्टेन किससे? एगार एगार से ऑब्टेन करते हैं। एगार एगार एक सी वीड से, और ये जेल फ्रिक्वेंटली यूज आता है कई प्रोडक्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे एगार एगार जेल को हमने यूज में लिया, और टारगेट इसका प्रिंसिपल किस पे है? द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, वो धीरे धीरे
इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट पे मूव करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस होगा वो फास्टली मूव करेगा इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट पे। अब इसमें अदर केमिकल कौन सा यूज में लेते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड इज कॉल्ड स्टेनर। ये स्टेनर यूज में लेते हैं। तो जो जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो रहे हैं, दीज ऑल डीएनए फ्रेगमेंट विच इज अंडरगोइंग द सेपरेशन, तो इससे क्या हो जाएगा, वो कलर्ड हो जाएंगे। तो क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा किस पे? ये क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा किस पे? यूवी, जो यूवी स्किन होगी, क्लियर, इस स्क्रीन पे क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा कलरफुल ऑरेंज कलर के बैंड। इथिडियम ब्रोमाइड जो होगा इस मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे डीएनए को क्या कर देगा? ऑरेंज कलर दे देगा। तो ऑरेंज कलर के बैंड एक तो विजुअलाइज होंगे ड्यू टू इथिडियम ब्रोमाइड, और ये बैंड कुछ थिक होंगे कुछ थिन होंगे। तो थिन होंगे दैट मींस डेफिनेटली लाइट वेटेड होंगे, एंड देन इट मूव फ्रॉम ऑन इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट, क्लियर। और दूसरे जो होंगे जनरली जो थिक होंगे, हैवी वेट होंगे, तो वेट ज्यादा होगा डेफिनेटली मॉलिक्यूलर वेट, तो ये धीरे धीरे मूव करेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट। सो इट इज द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम उसका पूरा स्टेप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एंड देन डायग्राम, केवल रे डायग्राम की हेल्प से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को करेंगे। नो नीड टू राइट द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर।